Video we will see the difference between procedure established by law versus due process of law. Okay, now why was it in news? Because a few days back High Court dismissed Juhi Chawla's lawsuit against F5G trials, terming it as abuse of process of law. So what happens ki Juhi Chawla has filed a lawsuit with respect to that, with respect to stopping the this 5G trials that are going on, and High Court dismissed the plea, saying that it is an abuse of process of law. Fine. So that's why this process, due process of law is again in news, and it is like evident from the news that it can be an important question in the prelims as well. So the difference between procedure established by law and due process of law. See, the procedure established by law means that a law is duly enacted by the legislature. Okay? Means there is a procedure which is established by the law. Now, who makes the law? Obviously, the legislature, right? So, this procedure is established by a law, by the legislature, or the concerned body is valid only if the correct procedure has been followed to the letter. Now, what do we mean when we say that this particular thing or this act is valid because it has been made by following the procedure which is established by the law? It means that the validity and the sanctity of the law depends upon the procedure by which that law is formed. Fine. Now, the concept has been enshrined in Article 21 of the Indian Constitution, which states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. That means आप किसी भी person को उसकी life या personal liberty से deprive नहीं कर सकते हो, except अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. हाँ, तब कर सकते हो अगर आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा जो कि लॉ ने बनाया गया है, लॉ के द्वारा बनाया गया है. फाइन. नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ डॉक्ट्रिन दैट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, बट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द लॉ इज मेड फेयर एंड जस्टिस. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? It not only checks that the procedure by which we are going to take someone's life or liberty, is it established by law, but it also checks that whether this law which has been created is fair and just. Means सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो जिस प्रोसीजर से हम किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी लेने वाले हैं, क्या वो प्रोसीजर जिस लॉ से बनाया गया है, क्या वो लॉ फेयर या जस्ट था? दैट मीन्स यहाँ इंटेंशन को चेक किया जाता है कि क्या किस इंटेंशन से ये प्रोसीजर क्रिएट किया, ये लॉ क्रिएट किया गया है जिससे कि किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है. ठीक है, तो ये आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में. नाउ अगर हम शॉर्ट में देखें, जस्ट टू कीप इन माइंड सर्टेन वर्ड्स जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो GS2 के पेपर में भी बहुत इजीली पूछे जाते हैं, स्टैटिक पार्ट बन जाता है. ठीक है, दैट जस्ट strike out the comparison between procedure established by law or the due process of law. Fine. So see, procedure established by law, this we have like this has its origin from the British Constitution. सो द एरिया और इसका जो है वो काफ़ी नैरो है, स्कोप जो है वो कम है. ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं कि क्या वो प्रोसीजर किसी लॉ ने बनाया है या नहीं बनाया है. सिर्फ हम इसमें प्रोसेस को चेक कर रहे हैं. एंड सो इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली. वाई? बिकॉज सी, यहाँ पे अगर एक प्रोसीजर लेजिस्लेचर ने बना दिया, वी आर नॉट चेकिंग दैट लॉ सही था या नहीं था, हम उस प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं. ठीक है, अब उस प्रोसीजर को कौन इम्प्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो क्या उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है? अगर एग्जीक्यूटिव फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो गलत है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव को चेक किया जा रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये इसका जो ओरिजिन है वो US के कॉन्स्टिट्यूशन से है.
स्कोप इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें लॉ का जो लॉ बनाया गया है, जिसके थ्रू वो प्रोसीजर क्रिएट किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव को भी चेक किया जाता है। क्या वो लॉ फेयर था, ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिविटी थी उसमें, ठीक है। एंड इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों को देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉ को चेक किया जा रहा है। अगर लॉ को चेक किया जा रहा है दैट मीन्स हम लेजिस्लेचर को भी चेक कर रहे हैं इसमें, ओके। So these are the differences. Now because we have talked about due process of law, so we should know from which Supreme Court judgment this due process of law has become a doctrine and it has become too essential for the not only for the Indian judiciary but for the protection of the fundamental rights as well. Fine. So इट्स विद द मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ठीक है। मेन थीम क्या थी? एक्सपेंडिंग द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले क्या था कि आर्टिकल 21 के अंदर आप लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले सकते हो if the procedure which is established by the law. But now what we want, not only the procedure but the law should be fair and just as well. So the right to life and personal liberty under article 21 reads, जो मैंने आपको पहले बताया, that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This was the earlier version. In other words, courts were not allowed to question any law. कोर्ट्स किसी लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे अगर प्रोसीजर सही है तो, ठीक है। नो मैटर हाउ आर्बिट्रेरी और ऑप्रेसिव एज वायलेटिंग द राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इफ द लॉ हैड बीन सूटेबली पास्ड एंड इनेक्टेड। अगर लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया है, चाहे वो लॉ ऑप्रेसिव है, चाहे वो लॉ फेयर नहीं है, चाहे वो लॉ अनजस्ट है, अगर एक लॉ बना दिया है एंड उस लॉ से कोई प्रोसीजर बनाया गया है किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को लेने के लिए, तो वहाँ कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। However, by vesting in itself the power of substantive review under Article 21, the court transformed its and come up with this idea of due process of law. Fine. So the Supreme Court's judgment in the Manika Gandhi case effectively mean that procedure established by law under Article 21 would have the same effect as the expression due process of law. In a subsequent decision, Supreme Court stated that Article 21 would read as कि अब Article 21 को ऐसे read किया जाएगा further on that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to fair, just and reasonable procedure established by valid law. Okay, so fair, just and reasonable procedure. Okay, so this has come up with the Manika Gandhi judgment. And further Supreme Court in one or the other cases have come up with this. Then now Article 21 would be read according to the things that I have just told you. So I hope due process of law and the procedure established by law, the differences in between these two is now clear to you, and this is important not only for the prelims but for the mains Tier 2 paper as well. So that's it, and thank you.